Have you tried? Have you done the Mm, formic assignment? yes. Any challenges? No. Okay. So let me share my screen. So what is the difference between controlled and uncontrolled form? Control form is the controlled by the React and uncontrolled form is the not controlled by the and It is controlled by HTML DOM. okay. Hmm. When we refresh the page controlled in control form, the state is re-rendering, but in Hmm. uncontrolled form, it is not performing. And Oh, in controlled form, we use state control custom hook, and in uncontrolled form, we use ref custom hook. very good. Okay. So today, let me share my screen. तो पहले हम validation देखेंगे, how to validate the things, and then we will go for next concept. Now, today, what do you mean by validation? Tell me, what is form validation? What is the meaning of form validation? To validate the user data. Validate the data that is provided by the user. Correct. So let me share my entire screen now. So this is the application that we had already created. So let me just turn on the JSON server first. Okay, then I'm going to do the npm start. So let us check that what is our current status. So this is the add employee, the formic form that we have created, right? We are able to provide the ID, name, salary, URL, right? And when I click on add employee, it is definitely adding the record in the db.json or in the backend. Now the question is that are we validating the data? Whatever data that is going in the database, is it correct? Okay. So if I check the form, I realize
that I have not implemented any mechanism for validating the data. There is no data validation. There is no error messages that are shown, right? There are no error messages that are shown. So, what can we do for that? What can we do for that? So, I'll just give this as empty. ठीक है. So, there is no data validation performed. So, if I want to implement a kind of data validation over here in the formic form, can I do that? Absolutely, I can do. How I have to do that? Now, we have seen that in this use formic hook, using the use formic hook, I'm giving the initial values, or rather, values is a property within use formic, which will contain all the attributes, or which will contain all the elements, है ना. तो जितने फॉर्म एलिमेंट्स आप क्रिएट करोगे, इनपुट एलिमेंट्स आप क्रिएट करोगे, एंड यू आर मेंशनिंग द आईडी, okay, that will be as a part of formic dot values. जैसे this will be a formic dot values dot id, this will be formic dot values dot name, this will be formic dot values dot salary, this will be formic dot values dot image path. So one thing is very clear, that whenever you are creating an input element, you have to specify the id, and then whatever id you have mentioned, okay, that will become a property within the values ऑब्जेक्ट. तो वैल्यूज ऑब्जेक्ट के अंदर वो एलिमेंट जो है उसका करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी बनेगा. नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू परफॉर्म द वैलिडेशन. नाउ मैंने इनिशियल वैल्यूज दिया है, ऑन सबमिट भी दिया है. आफ्टर दिस, इसी फॉर्मिक में, यूज फॉर्मिक में, आई एम गोइंग टू राइट वन मोर फंक्शन. जैसे ऑन सबमिट हैंडलर था यूज फॉर्मिक में, can you see that when I type over here, there is something called as validate. There is something called as validate. Okay. So, validate अगर करते हो आप, validate का फंक्शन अगर आप देते हो, इसका मतलब कि फॉर्मिक का जो फॉर्म है, you are applying a validation function on it. You are applying a validation function on the on the formic form. So, यहाँ पे you are going to give values. Now obviously वैलिडेट फंक्शन को भी वैल्यूज आने वाले हैं, आपके फॉर्मिक फॉर्म पे आपने जो भी वैल्यूज दिए वो वैल्यूज आने वाले हैं. नाउ विद इन दिस फंक्शन यू आर गोइंग टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट. एरर्स नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे. ओके, यू आर गोइंग टू क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी जेसन ऑब्जेक्ट ऑफ एरर्स. एंड नाउ यू आर गोइंग टू चेक इफ values dot id, यहाँ पे वैल्यू, okay, if values dot id, okay, is less than 0. If it is less than 0, क्योंकि हमें पता है आईडी का वैल्यू ये नेगेटिव नहीं हो सकता है. आईडी कैन नॉट बी नेगेटिव. सो आई एम गोइंग टू चेक that if id value is less than 0, okay, then okay, less than or equal to 0 में भी, क्योंकि id का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता है. ओके, बट हमने इनिशियल वैल्यू में 0 दिया है, सो आई विल राइट if it is less than 0, then I am going to say here errors dot message equal to, and I am going to give. now ये message नाम का प्रॉपर्टी अपने आप errors ऑब्जेक्ट में ऐड होने वाला है. errors जो हमारा empty json ऑब्जेक्ट है उसमें अपने आप we are adding one property called as message, and here I am showing, I'm assigning some message to it. Okay, id cannot be negative.
Correct? ID cannot be negative. Now, similarly, जैसे ID को हमने check किया. Similarly, I am going to check if, okay, values dot name. Okay, अब name जो है उसका minimum length ये 3 characters होना चाहिए. So name dot length. Okay, if the length is less than 3, then I'm going to have your errors dot message equal to, okay, minimum 3 characters required. Okay, then if values dot salary less than 0, सैलरी का भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो errors dot message इक्वल टू सैलरी कांट बी नेगेटिव. ओके, अब इसके साथ साथ और एक कंडीशन हम इसमें ऐड करते हैं. ओके, अभी फिलहाल तो हमने सिर्फ लेस देन 0 या लेस देन लेंथ लेस देन 3 लगाया है कि हमें वो वैल्यू वहां पे आई वांट दैट दिस आईडी इज रिक्वायर्ड. ओके, ID is something that is required. There should be some or the other value in it, right? So obviously, this is going to check, okay, that there is going to be some value or not. Okay, and if that value is less than 0, then this message is assigned. If the length is less than 3, this is assigned. Salary is less than 0, it is assigned. And now image URL also. If errors, oh sorry, not errors. Let me just scroll down. If values dot image path, okay, is not equal to empty, or maybe equal to empty, then okay, errors dot message equal to image path required. Okay, image path required. अब ये मैंने एरर मैसेजेस जो है मैंने मेरे हिसाब से जो वैलिडेशन कंडीशन लगाना था हर एक हर एक फील्ड पे वो हमने लगा दिया. एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू गो इन द प्रेजेंटेशन एंड हियर अगर डेटा इनवैलिड है तो आई वांट टू शो अ मैसेज. आई वांट टू शो अ मैसेज इफ द डेटा इज इनवैलिड. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे फॉर्मिक डॉट ओके एरर्स डॉट आईडी. तो आईडी में अगर एरर्स है, ओके, ये जो भी हम वैलिडेशन लगाने वाले हैं आईडी में अगर आईडी आईडी एट्रीब्यूट पे अगर एरर्स है, ओके, इफ द एरर एग्जिस्ट ऑन आईडी देन आई एम गोइंग टू in that case I am going to show one div tag. I am going to show one div tag, and what I am going to display in that div tag, I am going to display errors or maybe formic dot errors dot id dot message. Okay, so I'm going to show the message. Okay, else it is going to be null. Null मतलब ये div tag display नहीं होगा. Okay, null means div tag will not be displayed. So first of all I'm checking that whether there is any error, okay, in the id. So if it is there, then I'm going to display the message part. I'm going to display the message part, otherwise I will display null. Null means nothing will be shown. Okay, so just give me a minute.
Okay, sorry for interruption. Okay, so yeah, so formix.errors.id, if it is there, I mean ternary operator, it's a ternary operator. If the formix.errors.id exists, then we are displaying formix.errors.id. No need of writing message, वो अपने आप message जो है वो display कर देगा. Otherwise, we are displaying null. Null means nothing. Okay, so what is going to happen is कि यहाँ पे हम लोग एरर्स चेक कर रहे हैं ना. एरर्स में व्हाट आर वी डूइंग कि पहले हम चेक करें कि आईडी पे कोई एरर है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, एज आई सेड दैट जैसे रिक्वायर्ड वैलिडेशन होता है. रिक्वायर्ड मीन्स व्हाट कि वो वैल्यू चाहिए वहां पे. ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट हैव गिवन अ कंडीशन दैट वैल्यूज डॉट आईडी, okay, less than 0, but it doesn't check that whether values.id is existing or not. So what I can do is I can give a multiple condition. If values.id, okay, and if not values.id, not means what कि values.id अगर नहीं दिया है यूजर ने, if it is not given, or maybe I can have a separate if else also, because that will give a more precise error message control. Okay, so what I can do is here I can have if not values dot id. Not values dot id मतलब यूजर ने values dot id प्रोवाइड नहीं किया है, इट इज नॉट गिवन. Then in that case I want to say here errors id is required. Okay, else if, okay, अगर समझो यूजर ने वैल्यू दिया है बट वो वैल्यू, okay, else if the value is less than 0, then id cannot be negative. So this is what we have applied on the id part. Similarly what I can do is कि सबसे पहले चेक करो कि नेम दिया है कि नहीं दिया है. So if values dot name, if not values dot name, if the user has not given the values dot name, then I can say here errors dot message, that is, okay, name is required. Name is required. And अगर यूजर ने दिया है नेम बट लेस देन 3 है उसका लेंथ, so this error message will be given, right? So else if में ये डालेंगे कि अगर लेंथ लेस देन 3 है तो. Similarly I will do it for salary. Okay, that if, okay, values dot salary, if not values dot salary, then I am going to say here errors dot message salary is required. Salary is required. So ये required validation हम लगा रहे. Else if मतलब यूजर ने वैल्यू तो दिया है बट वो लेस देन 0 है, then salary can't be negative. And similarly I'll do it for what is this, image path. Values got image path, so image path is required. Else if, हाँ ठीक है, इमेज पाथ को हटा देते, एक ही लगाते हैं रिक्वायर्ड का. ओके, and now what is going to happen is automatically the error, this messages that we have given will be populated. So we don't have to explicitly write here message thing. वो अपने आप देखेगा कि आईडी के अगेंस्ट कोई एरर्स है क्या, अगर है तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दो. जो भी एरर मैसेज है, एक ही मैसेज होगा एट अ टाइम, so whatever is the error message that will be displayed. Okay, so if I go over here in the form, oh, where is the form? एक minute. So see here, if I try to give, if I try to give here -8, हाँ वो बटन क्लिक पे होगा, एक मिनट. First we will give all the messages and then we will do it. Button click पे it will be executing. Okay, and yeah, I should not forget one more thing कि ये सारा रिटर्न होने के बाद, वैलिडेशन के बाद यहाँ पे रिटर्न एरर्स करना है. रिटर्न एरर्स, तो एरर्स का ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे जो भी है.
And then similarly here I will write formic dot errors dot name. अगर है तो हम ड्यू टैग डिस्प्ले करेंगे, ड्यू टैग में formic डॉट एरर्स डॉट नेम, तो नेम के अगेंस्ट जो भी एरर मैसेज है वो डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नल डिस्प्ले होगा। नल मतलब नो एलिमेंट यहाँ पे। एंड सिमिलरली वी विल डू इट फॉर, सॉरी आई थिंक सो आई मेड इट एट द रॉन्ग प्लेस। एक मिनट। नेम का पार्ट नेम में होना चाहिए, यहाँ पे होगा सैलरी। एंड सिमिलरली हियर वी विल पुट इट फॉर इमेज पार्ट। Okay, so now this validation function will execute when I click on the button. Okay, and if the data is invalid, the addition will not happen. Okay, so now let us refresh this form. हाँ, now see, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहले से ही आपको एरर मैसेज दिखा रहा है, राइट? तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले है। And what is getting displayed? So now let us see that whether how this is working. I'll give some negative value. I'll give some name which is just one character. I'll give salary also negative, and I'll not provide the image URL, and I say add employee. Okay, wait a moment. Let me check. It has not added. It is not showing me the validation message also. यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स गड़बड़ है शायद। div tag format whatever system format dot text dot id and format dot errors dot id. Let me just try again. Negative value
errors I'll get some negative value, no image URL. So why it is not showing the error message? Reading errors. Cannot read properties of undefined. यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है. Here it is giving some problem. Okay. Format.errors.id line number. Okay, so it is giving some problem over here. So while displaying the error messages or checking for the error message, it is giving a problem. So let me just check. Give me a minute. Why it is giving a problem? Oh, sorry, extremely sorry. It is not here. यहाँ पे मैसेज नहीं लिखना है, errors dot id लिखना है. This is also message for errors dot id. So don't write message over here. We are storing it in errors dot id. Then this should be errors dot name. This also must be errors dot name. Then here it must be errors dot salary because वहां पे फिर वो message read नहीं हो रहा है ना. It is not able to read that message property. So we are going to give the property name itself, errors dot salary, errors dot id, errors dot image path. Okay, and now it will be able to read this. What is that? Errors dot salary or errors dot whatever. So let us now try to run this. Let me refresh the form, and I will give here -9. So here you can see that it is automatically doing it, right? ID cannot be negative. Let me refresh this form again. Okay, I will give here -9. Then here, let's say I give only one character. So it is giving me minimum 3 characters required. Okay, then salary. Let's say मैंने -9888 दिया, so salary can't be negative. And image path. But do you think that these okay, let me just refresh. I'll show you one thing कि अगर मैंने किसी इस पे क्लिक किया तो वो पहली ही बार में आपको एरर मैसेजेस दिखा रहा है. ये एक्चुअली मैंने अभी तक सैलरी टेक्स्ट बॉक्स को टच भी नहीं किया है एंड आई हैव नॉट देयर इनटू सैलरी बॉक्स बट इट इज स्टिल शोइंग. ये पहली बार आना चाहिए या यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स विजिट करने के बाद अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो ये मैसेज आना चाहिए? टेल मी, should this error message be shown at the Negative very attempted first time or after touching the text box but user is not entering? आफ्टर टचिंग द टेक्स्ट बॉक्स, राइट? यहाँ पे अभी हमारे इसमें वैलिडेशन हो रहा है. अभी देखो आईडी अगर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अगर मैंने नेगेटिव दे दिया, ओके, बट अभी तक मैंने नेम के टेक्स्ट बॉक्स को विजिट ही नहीं किया. आई हैव नॉट विजिटेड दिस टेक्स्ट बॉक्स और पहले ही वो बता रहा है नेम इज रिक्वायर्ड. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है रियल टाइम में. व्हाट हैपेंस, यू आर हैविंग अ फॉर्म. अगर यूजर कोई टेक्स्ट बॉक्स विजिट करता है और डेटा इनवैलिड डेटा है तो मैसेजेस आने चाहिए. पहली ही बार में सारे मैसेजेस नहीं डिस्प्ले करने चाहिए. तो उसके लिए okay, what is happening is I'm not visiting the text boxes, but before visiting the text box I'm getting this error messages. Actually error messages should be shown after visiting the text box. So for that what are we going to do is, okay, यहाँ पे जहाँ पे नीचे हम error message show कर रहे हैं, okay, there are certain built-in classes, okay, which will tell that whether the text box was visited or not. And there is one of the class called as touched. ओके, टच ये बिल्ट इन क्लास है. ओके, जिसका बुलियन है, 0 या 1 रहेगा. टच का मतलब क्या है कि वो टेक्स्ट बॉक्स विजिट हुआ है, वो टेक्स्ट बॉक्स विजिट हुआ है. सो आई हैव गिवन एंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल एंड?
if both the conditions are true, only then perform the action. तो इसका मतलब ये क्या है कि formic.touch.id, मतलब ये आईडी का जो टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट है, अगर वो टच्ड हुआ है, यूजर ने विजिट किया है, और विजिट करने के बाद उसमें एरर्स है, विजिट किया है एंड देयर आर एरर्स, ओनली देन डिस्प्ले द ड्यू टैग. तो सेम आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर कि विजिट करने के बाद अगर एरर है तो एरर मैसेज शो करो, पहले ही एरर मैसेज शो मत करो. सो if the user has visited the text box of name and then there are errors, then show the error message. Similarly, here I am going to do touched salary and there is the error message, then show the message, error message. Okay. Then here also image path and then there is the error messages, then show. अभी देखो, अभी इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ. Now you can see. Okay, let me close this. कि मैं अगर पहली बार मैं दे रही हूँ, ओके, तो बस उसी का वैलिडेशन मैसेज आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है क्या? विजिट करने से पहले इज एनीथिंग शोइंग द वैलिडेशन मैसेज? नो. अभी समझो मैंने नेम को विजिट किया एंड मैंने दिया ही नहीं, तो नेम इज रिक्वायर्ड. अगर मैंने वापस विजिट किया और मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिया, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड. सो व्हेन आर वी गेटिंग द एरर मैसेजेस? बिफोर विजिटिंग द टेक्स्ट बॉक्स और आफ्टर विजिटिंग द टेक्स्ट बॉक्स? यस. एरर मैसेजेस कब दिखाई दे रहे हैं? बिफोर, आफ्टर विजिटिंग, राइट? visiting the So for that we are going to make use of the class called as touched. Now salary को मैंने विजिट किया, आई एम नॉट गिविंग एनी सैलरी, तो सैलरी इज रिक्वायर्ड. बट फिर मैंने यहाँ पे दिया नेगेटिव सैलरी, सैलरी कांट बी नेगेटिव. So this validation should happen only when the user is visiting a text box. टेक्स्ट बॉक्स विजिट करने से पहले कोई वैलिडेशन नहीं होगा. ओके. एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द touched class. Okay. Now similarly image URL, I don't give now, image path is required. And obviously इस केस में अगर हमने add employee किया तो nothing is going to happen, because जब तक पूरा फॉर्म वैलिड नहीं होता है तब तक आपका जो ये ऑन सबमिट वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो हियर यू कैन सी देयर इज नो रिकॉर्ड गेटिंग एडेड. जब आप यहाँ पे प्रॉपरली एक अच्छा सा रिकॉर्ड वैलिडेशन, मतलब सारे वैलिडेशन जब फुलफिल होंगे, सारे वैलिडेशन कंडीशंस फुलफिल होंगे, ओनली देन ऑन सबमिट विल बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. सो इफ आई एम गिविंग ओवर हियर लेट्स से द नेम एज Jim, which is 3 characters, so 3 characters and more are okay. And then here I am giving some salary, let's say 87,000, and let's say the URL, the same image URL I'll give. Okay, so the validation message is gone and I say add employee. Now you can see form reset हुआ है, मतलब हमारा employee add हुआ, and you can see that the employee is added. 10 Jim, 87,000. Also, if I go in employees, I should be able to see Jim ka record over here added. This is absolutely correct. So this is how we have given a validation function. We have applied the validation in our form. Okay, where is our form? Add employee. तो फॉर्मिक फॉर्म को अगर वैलिडेशन देना है तो यू कैन हैव योर ओन वैलिडेशन लॉजिक. तो यहाँ पे वी आर नॉट रिलाइंग ऑन द HTML वैलिडेटर्स. हैव वी यूज्ड एनी HTML वैलिडेटर्स ओवर हियर? यू कैन सी देयर आर नो HTML वैलिडेटर्स, है ना. हमने कोई रिक्वायर्ड टैग नहीं यूज किया, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, या मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, या ऐसा कोई HTML वैलिडेटर यूज नहीं किया है. व्हाटएवर वी आर डूइंग इज थ्रू रिएक्ट. So we are applying the validation through React. We are checking for validation through React, and then we are showing the validation messages also through the React. So is this part understood? Yes? Yes, ma'am. Okay. So let this